Hello students, so today I am going to finish this topic applications of differential equation from this some examples of this miscellaneous exercise. Only 4 examples are left, 7, 8, 9 and 10. That is only 10 examples. That is 4 examples only. So let us start from the 7th example. First of all, we have to prove this. This is the general solution of this differential equation is this. He has given the differential equation and we have to prove this is the general solution of this differential equation. Process absolutely same वही है, लेकिन यहाँ पर example थोड़ा mode change किया है. He has given differential equation and also solution and we have to verify, we have to prove this one. Okay, let us start. Example number 7. First of all, write dy by dx plus y square plus y plus 1 divided by x square plus x plus 1 is equal to 0. वेरिएबल सेपरेट करेंगे डायरेक्टली, यहाँ पर इधर डिवाइड करेंगे, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा. 1 अपॉन वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 dy, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 dx is equal to 0. Single step variable separation. This happens because right hand side is 0. Now integrating on both sides. 1 upon y square plus y plus 1 dy. 1 upon x square plus x plus 1 dx. Right here C. So it is 1 upon quadratic. Y square plus y plus 1 by 4 माइनस 1 by 4 dy ऊपर लिखेंगे, प्लस क्वाड्रेटिक है, ऐड एंड सब्सट्रैक्ट बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर. सो फाइंड आउट दैट टर्म b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर, दैट इज 1 by 4. b इज हियर 1, a is here 1. So 1 upon 4 plus 1 by 4 minus 1 by 4 plus 1 by 4 minus 1 by 4. This is a 1 upon quadratic method. So y square plus y plus 1 by 4 is y plus 1 by 2 whole square. 4 minus 1 3, root 3 by 2 whole square. Root 3 by 2 whole square dy. Plus dx upon, same here, x plus 1 by 2 whole square plus root 3 by 2 whole square is equal to C. Is equal to what? C. Now this is 1 upon x square plus a square, 1 upon x square plus a square. 1 by a, 1 by root 3 by 2 is 2 by root 3. 2 by root 3. Tan inverse of y plus 1 by 2 upon root 3 by 2 plus 2 by root 3. Tan inverse of x plus 1 by 2 divided by root 3 by 2 is equal to C. So this is a process of integration. So evaluate the integration. 1 upon quadratic है, plus 1 by 4 minus 1 by 4 के लिए for getting perfect square. Y plus 1 by 2 whole square root 3 by 2 whole square. It is 1 upon x square plus a square. 1 by a, root 3 by 2 का reciprocal क्या? 2 by root 3. Same here. Now look at here. यहाँ से 2 by root 3 कॉमन लेंगे. 2 by root 3 common, in bracket tan inverse of tan inverse of 2y plus 1 upon root 3, 2y plus 1 upon root 3 plus tan inverse of 2x plus 1 upon root 3 is equal to C. 2y plus 1, 2 cancel after cross multiplication, same denominator cancel. That is the process. This 2 by root 3 right hand side becomes root 3 by 2. यहाँ पर apply करो property tan inverse x plus tan inverse y. This is the property of inverse. Tan inverse x plus tan inverse y is equal to, what is the result? Tan inverse x plus y upon 1 minus x into y. X plus y upon 1 minus x into y. So here becomes
Therefore, tan inverse of 2y plus 1 by root 3 plus 2x plus 1 by root 3 divided by now only calculation matter करता है यहाँ पर. Differential equation is very simple. This is not a homogeneous differential equation. We can't follow the linear differential equation method. Divided by 1 minus 2y plus 1 by root 3 2x plus 1 by root 3 is equal to c. So numerator में denominator common है, we can add directly रूट थ्री. सो थोड़ा जंप करता हूँ यहाँ पर स्टेप में, प्लस 2x प्लस 1 रूट 3 से रूट 3 इंटू रूट 3 3 क्रॉस मल्टीप्लाई 3 माइनस 2y प्लस 1 इंटू 2x प्लस 1 इज इक्वल टू c. क्रॉस मल्टीप्लाई किया 2y प्लस 1 इंटू 2x प्लस 1 एंड आफ्टर दैट दिस रूट 3 बाय रूट 3 आ जाएगा यहाँ पर, ये बाय रूट 3 आ जाएगा और रूट 3 इंटू रूट 3 इज 3, ये बाय 3 आ जाएगा. नॉट कैंसल. राइट साइड में रूट 3 बाय 2 c, रूट 3 बाय 2 c. ओके. Now we can transfer this tan inverse here. This is 2y plus 1, 1 plus 1, 2, 2y plus 2x plus 2 divided by 3 minus ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन 4xy 2y plus 2x plus 1 2 4xy प्लस 2y प्लस 2x प्लस 1. डिनोमिनेटर का रूट 3 ऊपर जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा. एंड हियर थोड़ा कैलकुलेशन प्रॉपरली करो, ये रूट 3 नीचे आएगा, रूट 3 नीचे इज इक्वल टू टैन राइट साइड में टैन इनवर्स साइड में टैन बन जाएगा टैन रूट 3 बाय 2 c. लेफ्ट का टैन इनवर्स राइट में शिफ्ट होगा, दैट बिकम्स टैन रूट 3 बाय 2 c. So this is 2x root 3 by root 3 by root 3 is root 3. So root 3 right side में 1 by root 3 1 by root 3 tan of root 3 by 2 c. ये 3 by root 3 कितना है? 3 by root 3 it is 1 by root 3 root 3 only. 3 by root 3 is root 3. यहाँ पर रूट 3 राइट साइड में क्या बन जाएगा 1 by root 3. शिफ्टिंग किया मैंने, ये पर एक दो स्टेप पे स्किप कर रहा हूँ बिकॉज दैट इज द पार्ट ऑफ कैलकुलेशन. यू बेटर अंडरस्टैंड दैट. सो न्यूमरेटर 2x प्लस 2y प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3 minus 1 2 minus 2x minus 2y minus 4xy. This minus 1 3 minus 1 is 2, बाकी everything is negative, minus 2x minus 2y minus 4xy. Now finally ऊपर 2 कॉमन लेंगे, नीचे 2 कॉमन लेंगे, that will cancel. Try to focus here. So numerator becomes x plus y plus 1, x plus y plus 1 divided by 1 minus x minus y minus 2xy is equal to this term, complete term is a constant, we say write c1. This complete term is constant, this constant, total constant, we write again one constant, that is c1. So left hand side में tan inverse की term है तो right side में tan inverse c नहीं लिखना है, we only for the logarithmic function but not for the sin inverse, cos inverse, tan inverse, because there is no relation in relation to this particular case. So अभी c1 इधर शिफ्ट हो जाएगा, x plus y plus 1 is equal to c into bracket 1 minus x minus y minus 2xy, and this is
जनरल सॉल्यूशन, इसे कहते हैं जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, हेंस प्रूव्ड। यही हमें प्रूव करना था। वेरी सिंपल, यहाँ पर एक दो स्टेप मैंने स्किप किया है, लेकिन आप जरा थोड़ा फोकस करके लिखो, डेफिनेटली विल गेट द करेक्ट आंसर। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ एग्जांपल नंबर 7. ओके, now let us see the example number 8. The normal lines to a given curve at each point xy on the curve passing through the point 2, 0. The curve passes through, this curve passes through 2, 3. जो भी required equation of curve आएगा, that curve passing through the point 2, 3 means we have to find the particular solution. Find the equation of curve. ठीक है, ओके। सो ज्योमेट्रिकल ये जो कंडीशन गिवन है वो अंडरस्टैंड होना जरूरी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस राइट सॉल्यूशन ऑफ एग्जांपल नंबर 8. लेट pxy be a point on the curve, any curve y is equal to f of x. Therefore slope of normal to the curve is -1 upon dy by dx. So this is a slope of curve, slope of normal to the given curve. This is -1 upon dy by dx. So now equation of normal. So यहाँ पर कैपिटल X माइनस एक्स, नो, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल का फॉर्मूला क्या है? y माइनस वाई इज इक्वल टू -1 अपॉन dy बाई dx. स्लोप दिस इज -1 अपॉन dy बाई dx. x माइनस x1, यहाँ पर कैपिटल X माइनस x लिखेंगे, कैपिटल X माइनस x. y माइनस, एक्चुअल फॉर्मूला इज व्हाट? y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप into x minus x1. Here slope of normal is what? -1 upon dy by dx. So इधर ट्रांसफर करेंगे y minus y dy by dx is equal to minus x minus x. So given curve at each point on the curve passing through what that point? 2, 0. So capital X 2, capital Y 0, 0 minus y dy by dx is equal to -2 minus x. So minus y dy by dx, 2 minus x को x minus 2 करेंगे, x minus 2. Okay, so now अभी वेरिएबल सेपरेट करेंगे डायरेक्टली. So y minus y, left hand side is minus y dy is equal to x minus 2 dx. Integrating on both sides, y dy is equal to integration of x minus 2 dx plus c, minus y square by 2 x square by 2 minus 2x plus c. सबको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2c. सो इधर प्लस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस c इज इक्वल टू c, कैपिटल C. दिस इज जनरल सॉल्यूशन. इसे इक्वेशन ऑफ कर्व कहेंगे. दिस कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट what 2, 3. So therefore x is to 4 plus 9 minus 8 is equal to c. So therefore 9 plus 4 13, 13 minus 8 5. So value of c is what? 5. So therefore
equation of curve is x square plus y square minus 4x is equal to 5. This is equation of curve. X square, find the equation of curve is what? X square plus y square minus 4x plus is equal to 5 because value of c is what? 5. ये भी solution का example है, particular solution का example है, but he has given geometrical conditions. The normal lines to a given curve at point xy on the curve passing through 2.2, the curve passes through 2,3. Find the equation of curve. So ये अपना slope of normal, ये equation of normal solve किया. The curve passing through the point 2,0 on the curve 2,0. So value ये equation general solution बन गया अपना. वही equation of curve है, but that curve passing through the point 2,3. So you will get the value of arbitrary constant c, that is 5. सब्स्टिट्यूट करना है, ओ प्लस 5 लेफ्ट में ले लो, -5 बन जाएगा. एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 0. दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ कर्व एंड हेंस दिस इज सॉल्यूशन of this example number 8. Very simple. We'll take 9 and 10. Let us see the example number 9, that is absolutely on applications of differential equation. The volume of spherical balloon being inflated changes at constant. Means inflated means volume of balloon inflated means the rate of change of volume of balloon is inflated changes at constant rate. At constant rate means some constant. So dv by dt is equal to k. K is any constant. If initially its radius is 3 units, initially means what? When t is equal to 0, उसका radius कितना था? 3 था. And after 3 seconds, 3 सेकंड के बाद t is equal to 3, it is 6 unit. Inflated में बड़ा हो गया वो, so 3 radius का 6 radius बन गया. Find the radius of the balloon after t second. Means it means what? We have to find the expression of radius in terms of t after t second. So very simple. So let us write here example number 9. Let r be the radius and v be the volume of spherical balloon. So what is volume? So volume of spherical balloon is what? 4/3 pi r cube. So इसका dv by dt कितना बन जाएगा? Rate of volume with respect to time. This is 4/3 pi constant, r cube का derivative 3r square dr by dt. ये 3 cancel. dv by dt 4 pi r cube dr by dt. But the volume is being inflated changes at a constant rate. So rate is given, which is constant. dv by dt is equal to any constant, that is k1. So dv by dt is what? Actual 4 pi r cube dr by dt is equal to k1. So r cube dr by dt is equal to k1 upon 4 pi. ये 4 pi राइट साइड में कांस्टेंट, लेफ्ट हैंड में डिवाइड हो जाएगी k1 by 4 pi. So r cube dr by dt is equal to k1 by 4 pi. उसको k कंसीडर करेंगे. So this is a known formula of volume of spherical balloon, 4/3 pi r cube. And so dr by, this is given condition, this is rate is constant, this is given. Okay. Now r cube dr is equal to k dt. R cube dr is equal to k dt. 4/3 3r square है यहाँ पर, वही 3r square, that is the derivative 3r square.
3r²। तो यहाँ पर r² बन जाएगा। अब इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, r² dr इज इक्वल टू k आउटसाइड dt प्लस c, r³/3 is equal to kt plus c, kt plus c. So initially the radius of the spherical balloon is 3 seconds. So here initially, that is t is equal to 0, r is equal to 3. 3 cube is 27/3 is equal to k into 0 plus c. The value of c is 9. c की वैल्यू कितनी आ गई? 9. So therefore r³/3 is equal to kt plus 9. c कितना है? 9 है। 3 का क्यूब 27, 27/3 9, 27/3 is 9. r³/3 is equal to kt plus 9. So now after t second, after t is equal to 3, after 3 seconds the radius becomes 6. So 6 cube divided by 3 is equal to k into 3 plus 9 plus what? 9. So 6 cube 216, 206 cube is what? 6 into 36, that is better, divided by 3 is equal to 3k plus 9. यहाँ से भी 3 कॉमन लेंगे हम, 3 into k plus 3, 3 2s are 6, 3 12s are 36, k plus 3 is equal to 24, k is equal to what? 21. What is the value of k? 21. We put here therefore r³/3 is equal to 21 t plus 9. k की वैल्यू 21, 9 as it is, r³/3 21 t plus 9. 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, r³ is equal to 63t plus 27, r is equal to 63t plus 27 raised to 1/3. So यही हमें फाइंड करना था. Find the radius of the balloon after t second. What is the radius of the balloon? 63t plus 27 raised to 1/3. Means what? We have to find the expression for the radius at time t, after time t second. So यही वो expression है. Absolutely बहुत simple example है. The rate is constant. Rate of inflated balloon is constant. That is the given. Being inflated changes at a constant rate. Changes means what? A rate, which is what? Constant. That is dv by dt is equal to constant. So dv by dt is equal to constant k. ये 4 pi इधर राइट में k1/4 pi होगा, ये भी constant है. Instead of this constant we write k. ऐसे हम लिख सकते हैं. इंटीग्रेटिंग किया, इनिशियली रेडियस इज 3 सेकंड, रेडियस इज 3 यूनिट when t is equal to 0. After 3 seconds radius being increases, that is 6. We have to find the value of k, we have to find the value of c. Integral constant of integration, constant of proportionality, and this is constant of arbitrary constant, and this is what? Expression for the radius after t second. Okay, this is example number 9. So we'll take now final example of this topic. Last example, definitely applications of differential equation. Read it, आप टेक्स्ट बुक से रीड करो. Example number 10 of miscellaneous exercise. A person asset starts reducing. Assets means property. उसकी जो भी प्रॉपर्टी है that is called the asset of the person. Reducing in such way that कम होती जा रही है. The reason doesn't mean here कम होती जा रही है person की assets. A way that the rate of reduction means a decay
of assets is proportional to the square root of the asset existing. So dx by dt is proportional to root x. Root x is the asset of the person. At that moment, if the assets at the beginning means t is equal to 0 was rupees 10 lakh. कितना है? 10 lakh. And they dwindle down means what? कम होती जा रही है to 10,000. 10 lakh से 10,000 हो गई 2 साल में. Show that the person will be bankrupt. Bankrupt means कंगाल. No property. That is called as a bankrupt. हमें प्रूव करना है उसकी प्रॉपर्टी 0 हो गई 2/9 years from the start. बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल है. एग्जाम्पल 2 बार रीड करो तब आपको समझ में आएगा. सॉल्यूशन ऑफ नंबर 10. लेट x be the assets of a person. So dx by dt, that is rate, is proportional to the square root of asset existing. Square root of asset existing. So dx by dt is equal to minus k times root x. Why minus? Because it is a reducing, disintegrate, decrease. So reducing it, that's why it is minus k. So 1 by root x dx is equal to minus k dt. dt right side, root x left hand side. Integrating 1 by root x dx is equal to minus k dt plus c as usual. What is the derivative of root x? d by dx of root x is 1 by 2 root x. It means what is the integration of 1 by root x? dx is equal to 2 root x plus c. root x के ऊपर डेरिवेटिव है 1, so 2 root x is equal to minus kt plus c. Initially that person has the asset is 10 lakh. Initially means t is equal to 0, x is equal to 10 lakh. So 2 into root 10 lakh minus k into 0 plus c. So c is equal to 2 into 1000. 6 0 है, so स्क्वायर रूट बनने के बाद 3 0 बन जाएंगे. सो c की वैल्यू आ गई 2000. कितने आ गई? 2000. सो इसको हम इक्वेशन फर्स्ट कहेंगे. सो दिस इज 2 root x is equal to minus kt plus 2000. Equation first. The property, they dwindle down to 10,000 in 2 years. Now t is equal to 2, x is equal to 10,000. So 2 into root 10,000 is equal to minus k into 2 plus 2000. So 2 into 100 200 is equal to minus 2k plus 2000. So minus 2k is equal to 2000 minus 200. Minus k is equal to 1800 by 2. So value of minus k is 900. This is the value of minus k. So सब एग्जाम्पल में c की वैल्यू k की वैल्यू हम फाइंड करते आ रहे हैं. इसके बहुत सारे एग्जाम्पल मीन्स ऑलमोस्ट ऑल एग्जाम्पल मैंने एक्सरसाइज के लिए थे. दैट वाज द एक्सरसाइज 6.6. सो माइनस k की वैल्यू कितने आ गई? 900. पुट हियर 2 root x 900t plus 2000. Equation second. Then show that the person will be bankrupt. the person will be
bankrupt, that is x is equal to 0. So 2 into 0 is equal to 900t plus 2000. 900t is equal to so 200, this is the value of k, not minus k, because 200 इधर 2000 माइनस 200 ये इधर, सो k की वैल्यू कितनी है 900, सो यहाँ पर माइनस 900 इज इक्वल टू 2000, सो t इज इक्वल टू 20/9, 0 0 कैंसल, t इज इक्वल टू 20/9. हम इसको ये फॉर्म में लिखेंगे, इट इज रैशनल नंबर 20/9, सो 2 into 2/9, 2 whole 2/9, 9 2 is 18, 18 plus 2 20, 9 2 is 18, 18 plus 2 20, 20/9. So the person will be bankrupt in 2 whole 2/9 years. So ये उसका आंसर, we write here hence proved. So person will be bankrupt in 2 and 2/9 years. 2 means 2 whole 2/9 years. That is actual 20/9. 20/9 को हम 2 into 9, 18, 18 plus 2 was 20/9. So this is the solution of example number 10. So ये होगा लास्ट एग्जाम्पल डिफरेंशियल इक्वेशन का. सो 12th का सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑलमोस्ट खत्म हो गया है. डिफरेंशिएशन, applications of derivative, indefinite integration, definite integration, applications of definite integration and differential equation. ये मैंने सबसे बड़े 6 टॉपिक कंप्लीट किए हैं. दिस इज द कंप्लीशन ऑफ कैलकुलस. इसके बाद सिर्फ 2 टॉपिक है, दैट इज द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एंड बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, इन शॉर्ट कॉल्ड व्हाट, पीडी एंड बीडी. बहुत ही छोटे छोटे टॉपिक है, सिंपल टॉपिक है. विल टेक दिस टॉपिक आफ्टर सम गैप. So this is the completion of differential equation. So I am very much happy. In the lockdown period, we completed the calculus section of 12th, that is differentiation to differential equation. Okay, so ये सब मैंने लॉकडाउन में कंप्लीट किया है. So all topic खत्म हो गए, सिर्फ पीडी एंड बीडी बाकी है. We'll take after some break. मैं एक बड़ा ब्रेक लूँगा, उसके बाद ये टॉपिक मैं कंप्लीट करूँगा. ओके, सो थैंक यू वेरी मच. We'll stop here.